चेक करते हैं एक बार, टाइमिंग डिस्कस करें क्लास एंड में. ओके, सेकंड स्टेप इज यू हैव टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स. थर्ड स्टेप is you have to find second derivative of that function. You have to find second derivative of that function. Step 2, step 3, and fourth step, most important step. Suppose you're getting values of x like c1, c2, c3. You are getting suppose 3 values of x. ठीक है, अगर 3 values मिल रही. So if f double dash of c1, put x c1 in place of x. तो जो first critical point मिला उसको x के place पे put करो. If this value is less than 0, it means if this value is negative, तो ये जो point c1 है, this point c1 is point of maxima. Point of maxima. ये उल्टा है ना, इसलिए इस चीज को ध्यान से समझो. अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा उस पॉइंट पे, तो पॉइंट क्या होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. क्लियर हुआ ये चीज? और अगर सेकेंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा. इज पॉइंट ऑफ मिनिमा. तो स्टेप्स क्लियर हुए? स्टेप नंबर 1 तो सेम है, स्टेप नंबर 2 भी सेम है. डेरिवेटिव निकालना, देन इक्वल टू 0 करना, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना. ठीक है. After that we have to find second derivative and we will put the values of x, critical points of x, in second derivative, and we will check the sign of second derivative. If it is positive, then we will get minima at that point. If it is negative, then we will get maxima at that point. Okay? नहीं, एक्चुअली फर्स्ट वाला जो मेथड है ना, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं ना जब हमको, तो इंटरवल्स डिवाइड करना, हर बार साइन चेक करना, ये थोड़ा सा हेक्टिक टास्क है, तो इसलिए ये बेटर हो. ठीक है. सो एक्सरसाइज 6.6, वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 6.6 विद दिस मेथड. Sir, if in question like the method is not given that we have to identify it using the second derivative or not, then which one should we use? You can choose any method, but specifically when the word problems are there, we will use this method only, because later on we are going to discuss many word problems based on maxima and minima. That topic will be we will solve using this method only. Okay? हाँ, ये वाला ये नहीं बता, ये एकदम फ्रेश है, एकदम नया टॉपिक है. ठीक है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.6. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द टर्निंग पॉइंट्स of the following functions and distinguish between them. Also find the local maximum and minimum values of the functions. So first function here, the first function is first का first function क्या, एक बार बताना. f of x is equal to plus 36x minus 20. Correct? So first we have to find critical value. For that we will find first derivative f dash of x. It will be 6x square minus 42x plus 36. Okay. Further, we can factorize this derivative here only. So we have to take 6 common first. Then the function will become x square minus 7x plus 6. Further, split the middle term, minus 6x minus x plus 6, and we will get the factors. तो ये फैक्टर्स मिल गए, x minus 1, x minus 6. So ये था step number 1. Second step is we have to equate the derivative to 0. So when we will equate this to 0, we'll get two critical values, that is 1 and 6. X is equals to 6 and x is equal to 1. Okay. Now what is steps 3? Step number 3 is we have to find second derivative.
So differentiate the first derivative. You can use this expression to find second derivative, because if you are using this, then you have to apply the product rule. So better to use this expression. So f double dash of x will be 12x minus 42. Okay, is it fine? नहीं हाँ ठीक है, 6 कॉमन ले लो चलेगा. f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? So 2x minus 7. Okay. ये step number 3 हो गया. Now what is step number 4? We have to put the value of x, what we have got in step number 2, in the second derivative. So put x is equal to 6 here. So f double dash of 6 will be 6 times 2 into 6 minus 7. Okay. So it will be 6 times 12 minus 7. And that is what? Positive or negative? We just need to check the sign. It is positive. It is something 5, 6 or 30. That is greater than 0. Okay. So we are getting positive value of f double dash at this point 6. So when we get positive, then that point is called point of minima. Okay. So here x is equal to 6 is point of minima. Point of minima. Shall we clear? Naina, clear? Okay. Yes. Yes, sir. Further, we have to find the minimum value also. So where we will put this value? Original equation, in original function f of x. Further, we will put 6 in the actual function. That will be 2 into 6 to the power 3 minus 21 into 6 square plus 36 into 6 minus 20. Yes. 1 के लिए भी निकालेंगे. Yes. So after this, we will get the minimum value, whatever it will be, you can calculate, and we will check whether x is equal to 1 is point of minima or maxima, because we have two critical points. So when you put x is equal to 1, the second derivative f double dash of 1 will be, yes, it is 6 into 2 into 1 minus 7. That is less than 0, negative. Don't need to calculate that, just you have to check the sign. It is less than 0. So at x is equal to 1, yeah, or x is equal to 1 is point of maxima. Point of maxima. And maximum value is what? F of 1. F of 1 will be maximum value 2 into 1 to the power 3 minus 21 into 1 square plus 36 into 1 minus 20. कितना आएगा? कैलकुलेट करो. Minus 41 plus 38. I think it is minus 3. चेक करना, minus 3 है क्या? 6.6 minus 3. अच्छा, इसमें इंटरवल्स 1, ओके 6, ओके, वो -128 आ रहा है. तो आंसर्स अगर आप चेक करोगे ना अपने बुक में, सो क्या लिखा है? 1, -3. इट मींस एट x is equal to 1 you are getting -3. That is point of local maxima and maximum value. And 6, -128. That means 6 is point of local minima and -128. Correct. So similarly, you can solve the second part of this question also. Sir, here we don't consider the value as x and y coordinate, no? No, you can consider it like that also. Actually, here we are getting for 1 we are getting -3. So here x is 1 and f of x is nothing but y. Because when we represent a function in graph, then we will take f of x as y. So we can write like this also, 1, -3. Okay. It is nothing but coordinate. Because when we represent a function in the as a graph, then that peak actually represent a coordinate, a point. Okay. So we can represent like this also. ठीक है, तुम लोग को भी क्लियर ना? मतलब बुक में जैसा 1, -3 लिखा है ना, तो उसको हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते. समझ रहे हो ना ये चीज? रिया, कुछ डाउट है क्या?
ये समझ में नहीं आया? देखो 1 x इज इक्वल टू 1 पे हमको वैल्यू क्या मिली, -3 मिली ना। तो ये 1 और -3 एक्चुअली क्या कोऑर्डिनेट है? किसके कोऑर्डिनेट है? वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जहां पर आपको मैक्सिमम मिल रहा है। और कब मिल रहा है? x इज इक्वल टू 1 पे, सो इट्स x कोऑर्डिनेट इज 1, f of x is -3, तो y कोऑर्डिनेट इज -3 बिकॉज f of x को y एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं ना। हम्म हम्म सेकंड में x की वैल्यू 1 आएगी, उसके बाद फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाल के चेक करोगे, दोनों वैल्यू सेम आ रही होगी। सेकंड स्टार्ट किया सॉल्व करना, नैना शैवी सॉल्व किया क्या? सेकंड 1 और 3 आ रहा है, दोनों का अलग आंसर। f of x is equal to x cube minus 3x square plus 3x. Okay, first we will find f dash of x. It will be 3x square minus 6x plus 3. Then take 3 common, so it will be x square minus 2x plus 1. Or further we can write 3 times of x minus 1 whole square. Then we will equate this to 0. Then 3 times of x minus 1 whole square is equal to 0. It means x minus 1 whole square is equal to 0. It means x minus 1 is equal to 0. It means x is equal to 1. So we are getting only one critical point. तो उसको भी स्प्लिट करोगे तो भी 1 आएगा, किसी को भी स्प्लिट करो, यहां पर भी स्प्लिट करोगे तो भी वही आएगा। हाँ, तुम कुछ गलती कर रहे हो, चेक करना प्रिया। सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट, इसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 6x minus 6. Okay, now put x is equal to 1 in this. So f double dash of 1 is what? It is 0. It is neither positive nor negative. If we will get positive, then it will be point of minima. If it is negative, then it will be point of maxima. But it is neither positive nor negative. So this point is point of inflection. Clear हुआ ये चीज? Since f double dash of x, f double dash of 1 is equal to 0, so x is equal to 1 is point of inflection. Point of inflection. That's it. So no maxima, no minima will exist for this case. Okay. Now solve next question. Second question. ये जो y है that is nothing but f of x. y को f of x लिख सकते हैं। ये हटा रहा हूं ना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी 2, क्या गिवन है? y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 7. ओके, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, यहीं पर फैक्टराइज यहीं पहले ही कर लिया करो। 3 कॉमन निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, सो 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 माइनस 3, माइनस 3 और प्लस 1 में स्प्लिट होगा। फर्दर we can take x common from this, we'll get x minus 3, and we can take plus 1 common from this, we'll get x minus 3, and further x minus 3 can be taken common from this and it will be x plus 1. This is f dash of x. Further we will put f dash of x is equal to 0, so 3 times of x minus 3, x plus 1
is equal to 0, we'll get two different values of x. First is 3 and second is -1. Okay. So these 2 points are called critical points or stationary points or क्या हो सकता है turning points, or also it can be called as extreme points, because in this point we can get extreme values. तो सारे की मीनिंग सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है. टर्निंग पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स. Okay, next we will find f double dash of x. So second derivative of this expression, it will be 6x minus 6. Okay, now put -1. F double dash of -1 will be -12. So that is less than 0. ठीक है. So x is equal to -1 is point of maxima. Point of maxima. And what about maximum value? So f of -1, that is equal to -1 cube minus 3 into -1 square minus 9 into -1 plus 7. So it is -1 minus 3 plus 9 plus 7. That is equal to कितना होगा? 16 minus 4, 12. I think 12 आएगा क्या? So f, हाँ. So -1, 12 ये आ जाएगा फर्स्ट आंसर. और इस पे क्या मिल रहा है? मैक्सिमा. और फिर उसके बाद एफ डबल डैश ऑफ क्या निकाल रहे हो? 3. क्या आ रहा है ये चेक करके बताना. f double dash of 3, f double dash of 3, it is 12, that is greater than 0. So f of 3 की वैल्यू चेक करेंगे. f of 3 is 3 cube minus 3 into 3 square minus 9 into 3, हाँ, minus 27 plus 7, so that is minus 20. So it is 3 comma minus 20, and this point is point of minima. Clear हुआ? Minima. Ria, clear na? Naina, Shaivi, clear? Yes, sir. Sir, once can you please show the previous question for 1 second only? This question? Yes, sir. Done. Okay. Have you understood this question? Question number 2? Okay. Yes, sir. Next, I think question number 3. It is also similar to that 1 and 2. You can solve question number 3 also using second derivative method. So it is positive, it is negative. हाँ, explain कर दो. Second का, third का, first. Third का first. Third का first में क्या given है? F of x is equal to x square. So first you will find f dash of x. It will be 2x. Then you will equate this to 0. So 2x is equal to 0. You'll get x is equal to 0. ये critical point मिल गया. Then you will find second derivative f double dash of x, that is equal to 2. Now put 0 in place of x in the second derivative. So f double dash 0 is what? क्या होगा f double dash of 0? कैसे 0 होगा यार? हाँ, x के प्लेस पे 0 डाले ना, 2 के प्लेस पे क्यों 0? तो क्या होगा? वो 2 ही रहेगा. समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, तो f dash of x में जहां x है वहां 0 पुट करते हैं ना. So x के प्लेस पे 0 पुट करो, you'll get 2. For any value of x, you'll get 2. किधर? वो तो फर्स्ट डेरिवेटिव में ना, हमको सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करना है ना. नहीं आया समझ में? रिया क्लियर? नैना, शैविक क्लियर? Yes, sir. I understood.
Okay, so here the second derivative is positive, whatever value of x is there. So x is equal to 0 is point of what? Minima or maxima? पॉजिटिव आया ना, तो मतलब ये क्या होगा? पॉजिटिव पे मिनिमा. So x minimum. is equal to 0 is point of minima. And what about minimum value? So put 0 here. कैसे बनाएगा? 0 square is 0. So minima at 0 and minimum value is also 0. So that means point of inflation is only considered when our answer is coming 0 while finding out the second derivative. Yes, whenever you are getting 0 in second derivative at suppose point C, then this point C is called point of inflection. Okay. If you are getting positive, that means this point is point of minima. If you are getting 0, is if you are getting negative in second derivative, then point of maxima. Okay. इससे कोई मतलब समझ गए ना? ओके, सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में. क्वेश्चन नंबर 4. आई थिंक 4 को छोड़ देते. हाँ, थर्ड का 7th. तो बताऊं क्या? फिफ्थ बताऊं? x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन x. ओके, फिफ्थ चेक कर लो. फिफ्थ, f of x is equal to We can x. take LCM and then apply quotient rule. Like that, we will be beginning. Yes, we can take LCM. After that, we can differentiate, or we can directly differentiate. Both the possibilities are there. We have already solved this question using first rule. I think we have solved this question from NCERT book. हमने NCERT के ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया था. आई थिंक मुझे याद आ रहा है. अच्छा, कुछ चेंज था क्या? ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते. We can directly differentiate this expression also. So here we can take 1 by 2 common. 1 by 2 take 1 by 2 out of the derivative, and the derivative of x will be 1. Okay. Okay, here 2 can be taken outside the derivative. And what about derivative of 1 upon x? Minus 1 upon x square. Minus 1 upon x square. हाँ, -1 x to the power -2. हाँ, वही लगाया. ठीक है. So it will be f dash of x is equal to half minus 2 upon x square. Okay. Further we can take LCM here. So it will be x square minus 4, 2x square minus 4. Okay. Further we will equate this expression to 0. So f dash of x is equal to 0. So it is x square minus 4 upon 2x square is equal to 0. So further x square minus 4 is equal to 0. Further x square is equal to 4, and we'll get x is equal to plus minus 2. But we will take x is equal to 2 only. We will not take minus 2. Why? Because क्वेश्चन पे ध्यान दो. क्वेश्चन में क्या लिखा है यहां पर साइड में? कंडीशन x is greater than 0 मेंशन है. Mention है ना. So that's why we will take only positive value of x. We will not take negative value. Okay. So only one extreme point is there. उसको भी इक्वल टू 0 करो तो भी x की वैल्यू 0 आएगी. वो भी कंडीशन वायलेट हो जाएगी. ठीक है. So now we will find second derivative f double dash of x. So second derivative of this expression will be I think second derivative यहां से कैलकुलेट करो. इस वाले पॉइंट से ना, यहां से. हाँ, यहां से. सो क्या आ जाएगा? f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0. ठीक है. तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -2 ऑलरेडी था. x टू द पावर -2 डेरिवेटिव क्या होगा बताओ जल्दी? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? -2 अपॉन एक्स क्यूब. यही होगा. क्लियर हुआ? d by dx of 1 upon x square
that is d by dx of x to the power minus 2. x to the power n वाला फॉर्मूला लगाओ, n x to the power n minus 1, so minus 2 upon x cube. अनुश्री समझ में आया? ये थोड़ा सा डायरेक्ट करना पड़ेगा ना, अब बार बार हम ये पहला टॉपिक डिस्कस नहीं कर सकते. यहां तक क्लियर? सो इट विल बी 4 upon x cube. Okay, f double dash of x. Now put x is equal to 2 and check the sign of second derivative. Is it positive? 4 upon 8. Yes, it is greater than 0. Okay. So x is equal to 2 is point of minima. Is point of minima. And minimum value, whatever it will be, I think it is 2. Minimum value will be 2. Clear, Chevy? Any doubts? Understood, sir. Okay. Naina, कुछ doubts है? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 6 and 7, you can solve these two questions also. In question number 7, the function is of degree 4. It is a biquadratic function. So when you will differentiate that, it will become a cubic function. Okay, so we will get 3 different values of x. We will get 3 different critical points. वो कैसे मिलेंगे? बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा ना पक्का? क्वेश्चन नंबर 4, वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. सॉल्व करें. सो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना रिया एक बार. f of x is equal to x cube ax square plus bx minus, हाँ, local maxima at x is equal to 0, local minimum at x is equal to 1. Okay. Okay. So just एक second ना, मुझे ये बताना, x is equal to 0 and x is equal to 1. These 2 points are what? They are critical points. Yes, they are critical points. They are turning points. They are stationary points. Correct? So how we get stationary point? How we get critical point? डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करने से हमको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं. क्लियर ये चीज? सो व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन f dash of x, it will be 3x square plus 2ax plus b. Okay, so when we put x is equal to 0 in this derivative, then it will become 0. Clear or not? So f dash of 0 is equal to 0 and f dash of next critical point is 1. F dash of 1 is also equal to 0. This point is clear? ये point clear हुआ कि नहीं? ठीक है? सर वापस बताओ ना. नैना फिर से बताऊं? यस सर. हाँ नैना देखो, ये क्रिटिकल पॉइंट हमको कैसे मिलता था? क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करते थे, फिर x की वैल्यू निकालते थे. ठीक है? हाँ. तो यहां पर जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? एक तो 0, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन 0 होता है, और x इज इक्वल टू 1. ये वो रिकॉल करो ना पॉलिनोमियल वाला कंसेप्ट, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, याद है? हाँ. तो x इज इक्वल टू 0, इसका एक 0 है, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करने पे हमको 0 मिलेगा, x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे भी 0 मिलेगा, इसलिए. क्लियर? ओके सर. अब इसके बाद क्या करेंगे? देखो इसके बाद अब हम लोग यहां पर x के प्लेस पे पुट करते हैं 0. ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 2a इंटू 0 प्लस b, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. सो विल गेट b इज इक्वल टू 0. b इज इक्वल टू क्या मिल गया? 0. हाँ, इसमें पुट करेंगे. यस, तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1
प्लस बी इज इक्वल टू 0। नाउ हाँ, बी की वैल्यू भी रख दो, बी की वैल्यू क्या है 0। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 2a इज इक्वल टू 0, you'll get a is equal to -3/2, that's it। ओके, सो ये दो वैल्यूज होंगी। बस यही क्वेश्चन में बोला है ना, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ओके, अच्छा अब देखो इधर ध्यान देना। अब एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस हमने किए ना मैक्सिमा मिनिमा के, ये क्वेश्चंस उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस ये वाले कम आने के चांसेस है, बट एक्सरसाइज 6.7 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मूव करते हैं एक्सरसाइज 6.7 पे। ओके, एग्जांपल्स में भी एग्जांपल्स आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अराउंड। मैं पता है कितने दिनों से करा रहा हूं। अभी वो कोर मैथ्स वाली जो बैच है ना, उसमें अप्रोक्सीमेटली मैंने 5-6 क्लासेस से करवा रहा हूं, 6-7 क्लासेस हो गई होंगी। ये वाला टॉपिक मैक्सिमा मिनिमा, मतलब अगर अच्छे से करना है तो टाइम लगेगा इसमें, या तुम लोग खुद से एफर्ट लगाओ तो होगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम भी लगता है, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, एक्सरसाइज 6.7। मार्जिनल कॉस्ट, रेवेन्यू कॉस्ट वो भी है। ओके चलो, नहीं अगर तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो नहीं होगा। अब वो सब जो भी होगा पता नहीं मुझे, लेकिन मैं एकदम एक चीज क्लियर कर दूं कि ना आप लोगों को ना अगर किसी भी डाउट से बचना तो यू हैव टू प्रैक्टिस। वो जो आपको लग रहा है ना कि पूरा मिक्स हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा, कैसे क्लियर होगा, वो आप करोगे ना वो अपने आप होगा। सॉल्व करो बट करेक्ट, बिकॉज द ओनली वे इज टू मेक मिस्टेक। आप मिस्टेक करोगे तभी इंप्रूवमेंट करोगे, ठीक है। ओके स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.7, देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ना रिया। हाँ, सो नैना एंड शैविक ध्यान देना एकदम अच्छे से, ठीक है। अब जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, उसमें आपको कुछ की पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखने। फर्स्ट जो की पॉइंट है ना, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी क्वांटिटी को आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो यहां पर किसको मैक्सिमाइज करना है, प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को मैक्सिमाइज करना है। क्लियर, ओके। सेकेंड चीज ये कि आपको क्या गिवन है, क्या गिवन है, सम ऑफ टू नंबर्स गिवन है। क्लियर ये चीज। सो इनिशियली वी विल कंसीडर द नंबर्स एज x एंड y। सो लेट अस कंसीडर दैट द नंबर्स आर x एंड y। ओके, सो देयर सम will be x plus y is equal to 24 according to question, and their product is x into y, and this product we have to maximize this product, so let us consider this as p. Okay, here p is a function of two variables, the variables are x and y. So if we want to find maximum value of any function, we have to differentiate that function and we will find critical points. But in this case, we have two variables. So we have to differentiate with respect to which variable. We have to decide for that. तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स हो गए, तो कैसे करेंगे। तो इसलिए ये गिवन वाला पार्ट जो है ना वो यूज होगा। ये गिवन वाले पार्ट से ना हम एक वेरिएबल को सब्सटीट्यूट करेंगे दूसरे के टर्म्स में। सो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 24 minus x, and we will replace y with this value, so p will be x into 24 minus x. Further open the bracket and you'll get 24x minus x square. Clear? Now this is your actual function p. Okay, अब इसमें मैक्सिमा निकालने का क्या रूल था, क्या स्टेप्स थे, डिफरेंशिएट। So we will differentiate with respect to x.
So we'll get dp by dx. Okay. So the derivative of this with respect to x will be 24 minus 2x. नेक्स्ट स्टेप क्या होता था डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वल्स टू जीरो. सो dp by dx इज इक्वल टू जीरो करो. dp by dx इज इक्वल टू जीरो. तो क्या होता है? Sir, x will be 12. Yes, you'll get x is equal to 12. That is your critical point. Okay. Next, we will find second derivative, double derivative. It will be d square p by dx square. उसको f double dash of x लिखते हो या ये लिखो, मतलब तो एक ही है ना. That is equal to what? सर -2. Yes. हाँ, कुछ बोल रहे हो नैना? सर हमें x की वैल्यू तो मिल गई है तो हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं x + y = 24. हमें तो नंबर्स निकालना है ना दो. हाँ, लेकिन हमको ये सही बोला उसने. आप लोग भी सुनो, यहाँ पर ध्यान दो. हमको तो नंबर्स निकालने हैं. हमको x की वैल्यू तो मिल गई 12, तो x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो. तो x 12 तो y भी क्या हो गया 12. सो द नंबर्स आर 12 एंड 12. यस, ये तो मिल गए नंबर्स, लेकिन हमको ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि ये जो वैल्यू मिली है ये तो क्रिटिकल वैल्यू है. दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स मैक्सिमा और मिनिमा. वी हैव टू चेक फॉर दैट आल्सो. For that, we will find the second derivative and we will check whether it is negative or positive. Here, the second derivative is negative. So, since the second derivative is negative, so this point is point of maxima. So, at x is equal to 12, you will get maximum value. Okay? Nana, clear? यस सर. नैना, हमने बस ये इसलिए किया है कि x is equal to 12 मैक्सिमा वाला पॉइंट है या मिनिमा वाला पॉइंट है वो डिसाइड करने के लिए. अगर ये पॉजिटिव आता तो हम बोलते कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा मिल रहा है. ये नेगेटिव है इसलिए प्रूफ हो गया कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा मिलेगा. ठीक है. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें. यस. क्या है इसके आगे? क्या पूछा है क्वेश्चन में? फाइंड द नंबर्स. वी गॉट द नंबर्स. अब क्या करना है इसके आगे? मैक्सिमा. हाँ, क्या प्रूफ हो गया मैक्सिमा है. ठीक है. और कुछ डाउट तो पूछो. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. अच्छा, तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे तो और बड़ा होगा इसका सॉल्यूशन. अभी वो वाले बड़े वाले सॉल्यूशन आने वाले हैं अभी. और हाँ, जब आएंगे तो लगेगा खत्म कब होंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 20. फाइंड द नंबर्स फर्स्ट केस इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम. So first part पहले consider करते. So it is given that sum of two positive numbers is 20. So first you will take x plus y is equal to 20. Second, आपको जो क्या देखना है? The sum of their square is minimum. हाँ, तो जिसको मिनिमम करना है वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इसको मिनिमम करना है. ठीक है, इसको मिनिमम करना है. इसको Not take like this x plus y whole square is equals to 20's whole square. No. Because it is mentioned that sum of their squares, square of their sum, if it is given like that, square of their sum, then we will take x plus y whole square. Okay. Okay. So further it is like this. Now we will give some name to this function. इसको कुछ नाम दे देते. नहीं, ये अभी डेरिवेटिव का लिया हमने. इसको हम f of x suppose consider कर लेते. Okay. F of x. So here we have two different variables x and y. So we have to replace y with its value. हाँ, कुछ भी ले लो. f of x नहीं लेना है तो s ले लो. जैसे पिछले बार हमने p लिया था ना, यहाँ पर s ले लो. Okay, take s. So s is equal to x square plus y square. So s is equal to x square plus y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? Yes, 20 minus x. So we will replace y with 20 minus x whole square. Clear yahan tak ka step? So this function has only one variable, that is x. Now we will differentiate this with respect to x. So its derivative will be ds upon dx. What will be its value? 2x plus derivative of this will be 2 times of 20 minus x into minus 1. Okay. Now simplify this expression.
Open the bracket and you will get 2x. It will be plus 40 plus 2x. Okay, it will be plus 2x, minus 40, sorry, minus 40 and plus 2x. चेक करो एक बार, क्लियर ना, कोई डाउट तो पूछो. प्लस माइनस की गलती तो नहीं कर रहे हो ना? So further ds upon dx is equal to, it will be 4x minus 40. Okay, हाँ 4 कॉमन ले लो. ds upon dx is equal to 4 times of x minus 10. Okay, now अब पहले इसको इक्वल टू 0 कर लेते हैं ना. ds upon dx is equal to 4 times of x minus 10, that is equal to 0. Then x is equal to 10. You will get x is equal to 10. Okay, x is equal to 10 मिल गया. Now find the second derivative. Second derivative from this expression. So d square s by dx square, that is equal to कितना आ रहा है? 4. 4 मतलब क्या आया? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव. ठीक है, तो ये जो पॉइंट हमको मिला, ये पॉइंट ऑफ क्या होगा? x is equal to 10 will be point of, नहीं ना, मिनिमा या मैक्सिमा मिलेगा ना? हाँ मिनिमा मिलेगा. अरे Minima. yes, minima. X is equal to 10 is point of minima. Clear? So the sum of square is minimum when x is equal to 10. And y is also 10. Put कर लो, y की वैल्यू भी 10 आएगी. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. Okay, Naina, shall we clear? Yes, sir. Next, start next question. Try the next part of this question. Now this part is same. This part is same for the second, and you have to redefine the function. Equation will be x square into y cube. Correct, correct, correct. So we can consider that as p. So p is equal to x cube into y square. And further you have to put the value of y. Yes. So Yes, like Shavi, you have any taken doubts? x cube and y square, and I have taken x square and y cube, so it will be similar. Just wait, let me read the question again. The product of square of 1, no, yes, we have to take x square into y cube. But if you change the terms, then answer will be same. X square into y and y square, x square into y cube and y, we can change x and y. Hmm. Hmm. 20 minus x whole cube. Further, we have to differentiate. For that, we will apply product rule. So first function, derivative of second, it will be like this. X square into minus 1 plus second function into derivative of first, that is 2x. Minus 3x square, 20 minus x whole square plus 2x, 20 minus x whole cube. चेक करो, ऐसा मिल रहा है ना एक्सप्रेशन. इसके बाद ब्रैकेट ओपन करके कॉम्प्लेक्स मत कर देना इसको. समझ रहे हो ना? यहां पर इसके बाद का सिंप्लीफिकेशन क्या करना है वो ध्यान रखना. इसके बाद क्या करना चाहिए? Sir, we will common. Yes. Yes, we will take common 20 minus x square. And we can take x also common from this. X भी common निकल जाएगा ना. And further, under bracket, it will be minus 3x plus 2 times of 20 minus x. And further, we will simplify. So it is minus 3x plus 40 minus 2x. And it will be 40 minus 5x.
Further, if you want, you can take 5 common also from this bracket. It will be 8 minus 6. Okay. This is your first derivative, dp by dx. Okay. 5x 20 minus x whole square and 8 minus x. Further, we will equate this to 0. dp by dx is equal to 0. We will get different values of x. Now tell me how many values and which are the values of x, critical points. What are the critical points? क्या क्या होगी x की values? कितनी वैल्यूज आएंगी? कितनी वैल्यूज आएंगी? 3 वैल्यूज आएंगी। 5x को x को भी इक्वल टू 0 करोगे ना, 5 को तो छोड़ दो, x को इक्वल टू 0 करोगे, you will equate this term equal to this term, so you'll get x is equal to 0, x is equal to 8 and x is equal to 20. Check. Okay, now we will find second derivative. इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या होना चाहिए, मैक्सिमा या मिनिमा? लीस्ट लिखा ना, नहीं सॉरी, हाँ मैक्सिमम, मैक्सिमम होना चाहिए. ओके, सो द प्रोडक्ट शुड बी मैक्सिमम. जस्ट वेट एंड यहां पर ध्यान देना, मैक्सिमम के लिए सेकेंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव, लेस देन 0. ठीक है, तो अभी इसको ना, इसको हम फिर से डिफरेंशिएट कर नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा इसको फिर से डिफरेंशिएट, हम सीधा ये लिख देते हैं डी स्क्वायर पी बाय डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, बस ये लिख देते हैं. ठीक है, अब वो आएगा ही आएगा, अब करके देख लेना बिना टेस्ट किए, करके देख लेना टेस्ट कर. वेट करो, अभी एक्स ये आ गया, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए, ये आएगा, आप करना चाहो तो कर लो, बट नहीं है, नहीं है चलेगा, बिकॉज बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएंगे, आप उसमें डेरिवेटिव में टाइम वेस्ट करोगे, आपको सिर्फ साइन चेक करना होता है. नाउ आउट ऑफ दीज 3 वैल्यूज विच वैल्यू इज योर फाइनल आंसर, 0, 20 और 8? क्यों? हाँ, और कोई, और कोई सोचो, अभी अभी पूरा क्वेश्चन की समरी देखो ना, दिस प्रोडक्ट शुड बी मैक्सिमम. Okay, so if you are taking x is equal to 20, then what about y? Value of y will be what? According to this, y will be what? 0. So if x is equal to 20, y is equal to 0, then this product will become 0. So it is not possible. X is equal to 20 is not possible. If you will take x is equal to 0, then again the product will become 0. So only x is equal to 8 is possible answer. So x is equal to 8 and y is equal to 12, you will get the maximum value of this product. Okay? Clear हुआ सबको? यहीं तक? क्यों? अच्छा, तो मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, उसको तुम लोग ट्राई करना. ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 you can also do that. In question number 3, it is given that the product of two positive numbers is 16. So now it is given x into y is equal to 16. Okay, इसको आप लोग चाहो तो हिंट नोट कर सकते हो और उसके बाद सॉल्व कर सकते हो. याद बन जाएगा, x into y is equal to 16. So y is equal to 16 upon x. ठीक है, अभी उसके बाद देखो क्या लिखा है, if their sum is least, so sum s is equal to x plus y. ओके, और x के प्लेस पे x होगा, y के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 16 अपॉन x. दैट शुड बी मिनिमम. सो यू हैव टू डिफरेंशिएट x प्लस 16 अपॉन x. ओके, नेक्स्ट, इसका सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, द सम ऑफ वन एंड द स्क्वायर ऑफ अदर इज लीस्ट. हाँ, फंक्शन क्या बनेगा ये बताओ मुझे, फंक्शन क्या बनेगा, सम ऑफ वन एंड स्क्वायर ऑफ अदर. व्हाट अबाउट द फंक्शन? The sum of one and square of other, x plus y square. So the function will be x plus y square. Okay. Similarly, you can solve question number 4 also. Find two positive numbers whose sum is 16 and the sum of whose cube is minimum.
So x plus y is equal to 16, it is given, and you will differentiate s is equal to x cube plus y cube. Okay. So question 4 भी होमवर्क रहेगा. बस इतना ही क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, 2-3 ही क्वेश्चन दे रहा हूं. कल मॉर्निंग फिर क्लास रखते हैं. कल की टाइमिंग क्या रखना है बता दो. 11 o'clock रखे. नैना शैवी क्लियर. 30 हाँ हाँ 11:30 बोल रहे हैं अनुश्री. 11:30 ठीक है. 11:30. नैना ऑफलाइन आओगे कल क्या है. ये सब offline आ जाती है 11:30 करते हैं फिर. ठीक है. ओके डन. बाय. Thank you, sir.